ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में प्रोग्राम्स कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग इसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट थ्री प्रोग्राम्स दैट यू पीपल नीड टू डू। तुम लोग को ही करना है, ठीक है ना। मैं टॉपिक बता दूंगा, उसके ऊपर हम लोग ने बहुत डिस्कशन किए हैं। तो उस डिस्कशन के रिगार्डिंग आज आप लोग को ही खुद से उस प्रोग्राम को करना है और करके मुझे आउटपुट शो करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। तो लास्ट क्लास में पहले भी हम लोग एक प्रोग्राम जो हम लोग किए थे कि कोई भी एक रैंडम डेटा को लेके उसका एक प्लॉटिंग करना है। कोई भी एक हम लोग उसको प्लॉट, एक डेटा हम लोग प्लॉट करेंगे, राइट। तो my question for today, first topic, that is one, that is take some data, take any random data. Okay, so you people take any random data, take any random data. Okay, just a minute. Take any random data as value and plot a bar graph, pie chart, scatter plot graph। पहले आज हम लोग पहले इस तीन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है ये आप लोग को खुद से करके दिखाना है, राइट। तो टेक एनी रैंडम डेटा एज वैल्यू एंड plot a bar graph, pie chart and scatter plot graph। तो आप लोग अपना जो सिस्टम है वहाँ पे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप लोग इसको अपने हिसाब से रन कीजिए। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग डॉली। लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम दिया था वो शायद तुमने मुझे बताया कि वो शायद हो चुका है, राइट। Yes, sir. So can you show me? Yes, sir. Wait, I need to give you permission first. Okay, permission मैंने तुम्हें दे दिया है। ओके फाइन। तो अभी यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या वहाँ पे लास्ट दिन? सर वो लाइन प्लॉट करने वाला ऑप्शन ऑफ था। अच्छा फाइन। तो टूल्स में जाके उसको चेंज किए। ओके फाइन। तो अभी तुम लोग का तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो लास्ट क्लास का जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है। तो नाउ वर्क ऑन दिस टॉपिक जो हम लोग अभी बात किए, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम बनाओ और उसको
ये तीनों जो है बार, पाई एंड स्कैटर प्लॉट, इन तीनों को ड्रॉ करो। तो ड्रॉ दिस थ्री बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट ग्राफ। तो तीनों के लिए बस तुम्हारा तो कोडिंग ऑलरेडी पहले में, डेटा जो है तुम उसके ऊपर ही काम करो, तो डेटा ऑलरेडी यू हैव। तो अकॉर्डिंग टू दैट just write the simple one line code and to draw the output or show the output. डेटा चेंज करेंगे तो हो जाएगा। डेटा चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर यू वांट। तो यू कैन चेंज द डेटा, तुम अपनी तरफ से भी डेटा खुद से कुछ और नया डेटा पे काम कर सकते हो अकॉर्डिंग वॉट एवर यू लाइक। जब हो जाए तो बताना, तो तब मैं तुम्हारा आउटपुट चेक करूंगा। सिर्फ बार ग्राफ के लिए बनाया, हाँ बोलो फिर से। बार ग्राफ के लिए बनाया। बार ग्राफ बनाया उसे, यस सर। तीनों को सर एक साथ। स्कैटर प्लॉट के लिए हम नहीं बनाए थे, हम लाइन ग्राफ के लिए पहले बनाए थे, स्कैटर ठीक है, प्लॉट तो के लिए। तुम एक ही मीन्स एक ही प्रोग्राम पे तीनों का कोड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रोग्राम में तीनों रन हो जाएगा। अच्छा, तो पहले एक एक करके शो करो, तुम अगर एक एक करके शो करना चाहते हो तो वन 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 यू कैन शो, ओके। तो फाइन, तो पहले जो बार तुम लोग बना है तुम उसको ही शो करो। सर बिटवीन हाइट्स ऑफ पर्संस। यस, तो plt डॉट बार, फाइन, ओके। ओके, so you can do the next one. पाई चार्ट।
सर इस प्रोग्राम में एक चीज आपको पूछना था सर, इसमें परसेंटेज में हम कन्वर्ट करके किए हैं, तो ये ऑटो पीसीटी के हेल्प से, तो अगर हम ये नंबर जितना वेट है अगर इसको डिस्प्ले करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे होगा? तुम इसको अगर वेट यहाँ डिस्प्ले देखो, पाई चार्ट के लिए एक्चुअली पाई चार्ट क्या होता है, एक हम अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो दैट इज अ सर्किल, राइट? यस एंड पाई चार्ट ऑलवेज कन्वर्ट, हम लोग छोटे जब मैथ से भी करते थे, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, चार्ट बनाते थे, तो तब वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जो भी डेटा है उसको हम लोग पाई चार्ट जब हम लोग बनाते थे तो तब हम लोग क्या करते थे, उसका परसेंटेज कन्वर्शन करते थे, राइट? याद है? यस यस पाई चार्ट एज सर्किल, तो हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज अ 100 होल ऑल, ठीक है? सो टोटल वैल्यू वी कंसीडर एज अ 100, ठीक है? 100 और जो भी है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके उस तरफ से उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने से पाई चार्ट निकलता है। तो पाई चार्ट पे तुम डायरेक्ट वैल्यू मींस डिस्प्ले नहीं कर सकते, जो भी तुम्हारा वैल्यू होगा उसको तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट करके ही उसको आउट पाई चार्ट पे शो करना है। सर यहाँ पे मेरे आउटपुट पे यहाँ पर वेट और परसेंट शो कर रहा है, हाँ, तो इसका तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। नो, इसको पाई अगर चार्ट हम के हटा लिए, देते हैं तो आर्गुमेंट हाँ, पाई चार्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है वेट और परसेंट ऐसा कुछ। तो यू कैन डिलीट सर दैट ये दोनों लेबल। डिलीट कर देंगे तो हाँ हाँ, तुम इसमें एरर दिखाएगा। लेबल्स को डिलीट कर सकते हो, वेट को भी डिलीट कर सकते हो। सॉरी, वेट को डिलीट नहीं कर सकते हो, नॉट द वेट, बिकॉज वेट हैव द वैल्यू, वेट तुम नहीं डिलीट कर सकते। Actually, wait, sorry, do the control Z, do the control Z, fine. Plot X label and plot Y label पे तुम जो दो लिखे हो, means the number 12 and 13, ये दोनों को डिलीट करो। लाइन नंबर 12 पूरा एंड लाइन लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 12 एंड लाइन नंबर 13, ये दोनों को डिलीट करो पूरा। अब रन करो, हो गया? यस प्लॉट डॉट पाई पे तुमने जो कुछ भी लिखा है वो बस पाई चार्ट का रिगार्डिंग जो सिंटैक्स है वहां पे तुमने उस कोड को लिखे हो, बट तुम्हारा जो लेबल्स था दैट इज प्लॉट डॉट एक्स लेबल एंड प्लॉट डॉट वाई लेबल। प्लॉट डॉट एक्स लेबल पे तुमने जो लिखा था दैट इज परसेंट और वेट, एंड प्लॉट डॉट वाई लेबल पे जो लिखा था वो दोनों एज ए लेबल डिस्प्ले होगा, नॉट इन द प्लॉट डॉट पाई पे तुमने जो लिखा है वो डिस्प्ले होता है। लेबलिंग अलग से जब तुम बना रहे हो एक्स और वाई का लेबलिंग, तब वही जाके डिस्प्ले होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, स्कैटर। Take your time and write the code for scatter plot. You can stop your share screen and you can go for the scatter plot. Take some time, think about it, and then show me the output. Scatter plot we need to draw, means the
scattered diagram will be there. The scattered data will be on scattered way. Okay, do it and tell me when you have done. सर हो गया। जो सब्जेक्ट टीचर है उनको कॉल करो, उन्होंने तुम्हें सब्जेक्ट पे एनरोल नहीं किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट टीचर को फोन करके बोलो कि मैं सब्जेक्ट पे एनरोल नहीं हूँ, मुझे एनरोल करने के लिए। फाइन। सब्जेक्ट टीचर से बात करके सब्जेक्ट टीचर से बोलो कि मुझे एनरोल करने के लिए उस सब्जेक्ट में, तुम्हें एनरोल नहीं है उस सब्जेक्ट। हाँ, अभी क्लास नहीं की हो क्या? अभी क्लास नहीं की हो तो कौन सा फिजिक्स क्लास लेते हो पता नहीं है तुमको? तो फिर कौन सा लेते हैं? फाइंड आउट मीन्स पता करो कौन क्लास लेते हैं, उनसे बात करो, ठीक है ना। हाँ बोलो डॉली। डॉली हो गया? सर हो गया इसका। ओके, तो मिनट। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। कैटर के अंदर बार भी क्यों आ रहा है? बार को हटा दो। बार ग्राफ वाला कोई है? बार ग्राफ तुम हटा दो, बार इज नॉट नीडेड। हाँ अभी करो। हाँ, दैट इज द एक्चुअल डेटा। ओके, कैटर पे फिर भी वेट अ मिनट, लाइन नंबर 14 को भी डिलीट करो।
लाइन नंबर 14 अब रन करो. That is the scatter graph actually. Scatter means only the points. Point graph also. Only the point value will be there. ओके सो स्कैटर में तुम कभी भी लाइन या बार कोई भी और कोई भी ग्राफ को यूज मत करो. स्कैटर मीन्स ओनली द पॉइंट एंड द डॉट. दैट इज कॉल्ड अवर स्कैटर ग्राफ. ओके फाइन. तो ओके ये तीनों चीज हो गया. तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोग्राम करेंगे. ओके सो यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन. आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम लोग मैथ्स में बहुत टाइम से ही फंक्शंस का प्रोग्राम किए राइट. कोई भी फंक्शंस का प्रोग्राम. तो हम लोग वैसे ही कुछ आज एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे. तो द प्रॉब्लम इज दैट सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. ओके so y is equal to function of x. This is a simple expression, a mathematical expression. ये हम लोग का एक simple mathematical expression है y equal to function of x. इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहेंगे. इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इस वैल्यू को हम लोग प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. तो क्या उसके लिए कोड करना होगा, क्या लिखना होगा, ये तुमको फाइंड आउट करना है. ये तुमको ट्राई करना है राइट. एनी डाउट? ट्राई करो पहले, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं तुमको हेल्प करूंगा कि क्या प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा. y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं राइट. तो ट्राई इट एंड देन tell me if any problem is there. Otherwise then I can help you that where the problem is. First of all you try from yourself. y equal to function of x. Simply a function of y equal to function of x. Similar, just we need to define some function first. Okay, simply a function having some values. Okay, so and then we need to make it in a graph. Make it in a graph. Suppose I will make it some more easy. हम लोग बहुत ही बार ऐसा कुछ फिजिक्स के टाइम पे, फिजिक्स जब हम लोग क्लासेस करते थे, ऐसा हम लोग कुछ को एक्सप्रेशन मिला था दैट इज एस इक्वल टू यू इंटू टी. एस इक्वल टू यू इंटू टी, ये किसका एक्सप्रेशन है तुमको पता है? एस इक्वल टू यू इंटू टी. Speed. So speed equal to speed and time, the relation between speed and time. So s equal to u into t. There are some more parts, that is g. G is our gravitational value into t. So g into t, right? So ये हम लोग का speed and time का एक relation था. हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे. So that is a y equal to function of x type program. Suppose the expression is s equal to u into t and g into plus j into t. So this is our problem. So first what we need some values of g. As we know the values of g. G का value हम लोग को पता ही है कि that is an universal value. So what is the value of g? 9.8 or 10. G is equal to 9.8.
not 10, 9.8. It is the universal value, right? So G equal to 9.8. Now we have to put some values of T and S and U. We need to put some values of T and S and U, and then we need to plot it in any type of plot, whether it can be scattered, whether it can be bar, and whether it can be a simple line graph, whatever it is. But we need to implement this function or this particular S equal to U into T plus G into T, this type of particular expression, mathematical expression into our program. So try to make it in this particular way. So simply we need to find some expression for this. S equal to U into T plus G into T, and we need to put some values of S, U, and T as G is universal value, as G is universal value. सर एक्स वाई में फंक्शन कैसे लेने समझ में आ रहा है. Okay, just a minute. So this is the code. क्या किया है हम लोग ने पहले, देखो पहले हम लोग जो मैटप्लॉटलिब को इनपुट किया दैट इज कॉमन. नाउ वी आर डिफाइनिंग सम फंक्शन. So that is definition function of U and T, because we need to calculate the value of S. So we need to pass the value of U and T. Okay, I hope you remember the function process: call by value and call by one is call by value, another one is call by रेफरेंस call by रेफरेंस reference. Call by value and call by reference, right? तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय वैल्यू प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, नॉट कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में ये तो कॉल बाय वैल्यू है, कैसे पता चलेगा कि ये कॉल बाय वैल्यू है, ये कॉल बाय रेफरेंस है? वैल्यू पास कराते हैं तो कॉल बाय वैल्यू होता है, और रेफरेंस अगर दूसरे फंक्शन का कोई पैरामीटर को लेकर करते हो. मान लो बस ये तुम्हें स्टेटमेंट दिया गया है, सपोज इट इज इंटरव्यू क्वेश्चन. यहाँ पे बस ये स्टेटमेंट तुमको दिया गया है, डेफिनेशन फंक्शन यू एंड टी, राइट? So how will you understand it is a call by value or it is a call by reference?
It is a very easy or basic question. Means how we can understand that it is a call by value or it is a call by difference process. Sir, in this function we are using means u and t, means value of u and t. Okay. And then what is the process in That's why reference? it is. Sorry. Reference पे क्या करते हैं हम लोग? In call by reference, we use a pointer value here. We use some pointer function. I hope you, if you think carefully, the function syntax is like this. Function of u pointer t means हम लोग call by reference मतलब जो हम लोग का वेरिएबल है उसका एड्रेस को हम लोग रेफर करते हैं, उस एड्रेस पॉइंटर एड्रेस से हम लोग उस वेरिएबल के वैल्यू को ट्रेस करते हैं. So call by reference means that will be a pointer value that will be referred, and call by value means हम लोग वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं, वैल्यू को ही पास कर रहे हैं. बट वायर इज कॉल बाय रेफरेंस पे हम लोग पॉइंटर वैल्यू को रेफर करके उसको पास करते हैं, राइट. So a basic difference we can say in call by value and call by reference. Call by value is just the variable name, whereas in call by reference there will be a pointer variable, one pointer variable at least. So अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग यूनिवर्सल जो फंक्शन है दैट इज जी, हम लोग इसको डिक्लेयर किए हैं, राइट. नाउ द एक्सप्रेशन s इक्वल टू u into t plus 0.5 of into g into t, so it is just considered as a expression, so it is a basic expression, right. Now return s. तो हम लोग ने जो फंक्शन था उसका जो प्रोसेस था यहाँ पे हम लोग ने पूरा मेंशन कर दिया कि वी नीड टू फाइंड आउट द फंक्शन वैल्यू ऑफ s. तो अप टू दिस पार्ट दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेयर हो गया. Now t is some function, s is some function value. Now we need to put the value of u. So we also give the value of u, right. u is equal to 56.4. Now there is a for loop, यहाँ पे हम लोग ने for loop implement किया, that is t into p, right. So time into velocity, so t into p, I equal to 0.1. So these are the values we are passing here for I in range up to the 200 value. So now sv of function is u of tv, u of t and v, and t appending the tv. So t is t dot appending dot tv, the total value, and s is appending the total value of s, speed velocity, time velocity. Now plotting that t and s, plotting the value of t and s, and that will be giving you this particular output, something like this. This will be the output part of this. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया. अब हम लोग का जो s का फंक्शन था यहाँ पे पूरा डिफाइन हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ s फंक्शन. So whereas the s, this is my function value, and we are getting the output section of this s from this particular part. t is my time function value. Now we are calculating or we are mentioning some u value, that is equal to 56.4, a value we are giving randomly, right. और यहाँ पे जो मेरा जो बाकी प्रोसेस था फॉर आई इन रेंज फ्रॉम द 200. so this is a little bit complex thing that how we are processing about the data. So forget about this particular part first, right. Consider on this particular part how to implement the function part of y equal to function of x. So y equal to function of x means we need to define some function. So define a function of u and t, and then write the simple statement of that particular function. Whatever the function we want to express in the graph part, we need to just write down the simplest format, the simplest, the easiest or simplest expression format of that particular. We have written that तो यहाँ पे हम लोग ने मेंशन कर दिया है, एंड देन फॉर आई इन रेंज यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू आपको मेंशन कर दिया, और उसके बाद हम लोग ने जो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है फॉर आई इन रेंज, आई का जो वैल्यू उस तरफ से हम लोग सब कुछ लिमिट सेट किया है. द लिमिट कैन बी चेंज एज पर आवर ओपिनियन. ओके, so suppose we have changed the things, so we can see the value or the graph have been changed as a line graph or as a scatter graph. So actually we are trying to make a line graph, so that's why we are using the plot. Okay, suppose the value is 100. So now we can see a continuous data value. So whatever the value point, as per that we are having the different of the data graph. The data sheet graph is actually getting different, right. Suppose we are making it 1000.
So the thickness will be much more. Suppose we are making it 1, only a single point value. So where the value? So the calculation of this is calculating from this particular part. For I in range, suppose I is 1. So we are calculating this particular part of the 1. So I is I into 1. So 1 into 0.1, that calculation of TB is 0.1. So the total append of TB, that is actually 1. And then we are putting the values in this particular section. And we are actually calculating some portion here. Right. So this is the calculation, or it is actually more complex. We can say this is a particular complex thing or complex procedure of y equal to 1. So first, what I will do in the next class, I will try to make a simple example, much simple, that will be very easy to understand how to plot this y equal to function of x, right? So now for the time being, we are skipping this particular part. We are going for another simple part, that is in my one of my last class, we have discussed that how to input an image, right? So I think there is one image at least I can expect is present in your laptop. So write some code for that to show the image, how to write the image, how to load a simple image and display the particular image in the output section. So write a Sir, simple code. in that class I was not present. Okay. Wait a minute. Visualization, Python image library. Okay, so this is the code. Suppose when we are actually working with image, so what we actually deal with, that is the Python image library. We need to import the Python image library. So that is called PIL, Python image library. And we are importing some image package. From Python image library, we are importing some package. Now this is PIL underscore G. This is my variable. PIL underscore G, that is my variable. We can write any type of variable names. Okay, so A dot A, B, C, D, any kind of variable name. So PIL underscore G, that is my variable. This is my package image. Image is my package, and we are trying to open or loading the particular image. So suppose this is the image, in my desktop I have an image named garden, right? And the format garden.jpeg. And then I'm trying that variable. So what is the variable here? PIL underscore G. So PIL underscore G dot show. So dot show means we are trying to show or display the particular image. We are trying to display the particular image, right? So now if I'm trying to run it, okay, just a minute, it will take some time to load. Okay, yes, it has been loaded. That's my platform. Wait a minute, it is taking time to load actually. So now you can see the image is loaded here. So by simply of 3 lines, I am going to code with the code again. I am going for the code. Okay, what the code is? Share screen. So by simply of a 3 lines, importing the image package, image.open of the garden image, JPEG, and then pil.g.show. By simple of these 3 particular lines, we can import any image. We can load and display any particular image. We can load and display any image. So by simple of 3 lines, we can load and display any image easily. Okay. So the time is got end. So we are going to discuss about this rest of the image packages or image, whatever the image we can work